morning, students. So students, we will continue with probability only, and in the earlier lecture we have solved some questions of exercise 7.2. We will continue with exercise 7.2 in this lecture only. So I will suggest everyone to kindly open their books of page number 102 of exercise 7.2. I will not be writing the questions, I will only be writing the solution. So kindly open the books and see your questions from the book. So I am solving question number 3. I have already solved question number 2 of exercise 7.2. So now I am solving question number 3. So question number 3 says 4 cards are drawn from the pack of 52 cards. Find the probability that 3 are king and 1 is jack. So first of all it says that 52 cards, if 4 cards are selected from 52 cards, then the number of sample spaces will be 52C4. So the sample space, the number of sample spaces, matlab the elements in the sample space will be 52C4. So now let's continue with the first part. So first point says 3 kings and 1 jack. So how many kings are there? We know that in total we have 4 kings. So out of 4 kings, 3 kings are selected, and we also know that there are 4 jacks, and out of 4 jacks, 1 jack is selected. So to write it in a better way, we will write it as if let event A be selecting 3 kings out of 4, which will be equal to 4C3. I am representing the first question and I will not be representing other questions because it consumes a lot of time. I will go directly to the questions. Let event B be selecting 1 jack out of 4, that is 4C1. So therefore probability will become 4C3 into 4C1 upon your total outcome. So my total outcomes is 52C4. So you have to solve it, and if the numbers are easy, you have to solve it and find the number. So here let's see the second part. So second part says all cards are from different suits. We know that we have 4 suits. 4 suits में से हर एक सूट में से अलग-अलग कार्ड किया गया है. So we know that there are 13 cards in heart, 13 cards in spade, 13 cards in diamond, and 13 cards in spades. So now we know that there are 13 cards in each and every suit. We also know that we have to select one card from each suit. So we have to do all this. So this will be a multiplication problem because we are selecting 4 cards. ये इवेंट भी अकर करेगा, ये इवेंट भी अकर करेगा, ये भी और ये भी, upon your total number of outcomes, and this will be my. If you will observe carefully, I am writing n. N means कि कितने events होंगे उस particular. For example, if I am taking this part as capital B, so in B the number of elements will be this. इतनी ये probability होगी, इतने elements आएंगे उसके probability में. So you have to solve this also. Next, let's do part number C. I am erasing this.
in permutation as well as combination, at least one heart means I get one heart and three other cards. कम से कम एक हार्ट तो आना चाहिए. एक हार्ट भी आ सकता है, दो हार्ट भी आ सकते हैं, थ्री हार्ट्स भी आ सकते हैं, फोर हार्ट्स भी आ सकते हैं. So my first case will become one heart and three other cards, two hearts and two other cards, plus three hearts and one other card, and my fourth case will become four hearts. That all the numbers, all the elements, sorry, all the cards that are drawn are hearts. So here we get four cases. हमारा फर्स्ट केस आया एटलीस्ट वन हेड बोला था कि कम से कम एक हेड आना चाहिए, एक से जितने मर्जी ज्यादा आ सकते हैं. तो वन हार्ट और थ्री. सो द फर्स्ट केस बिकम्स कि एक हार्ट आया, तीन दूसरे कार्ड आए. सेकेंड बिकम्स टू हार्ट्स आए और दूसरे दो कार्ड्स अलग आए. थ्री हार्ट्स आए, वन कार्ड है, फोर हार्ट्स. So we know that in hearts, the suit of heart has 13 cards, then other cards become 39. जो left cards रह जाएंगे वो कितने बन जाएंगे? 52 minus 13, that comes out to be 39. So let's solve this. So this will become 13 में से cards आया और बाकी के जितने भी cards थे उसमें से अलग आया upon the total probability. या फिर दो हार्ट में से आए और बाकी के दो कार्ड 39 कार्ड्स में से आए अपॉन your total probability. Plus students, I have already told you this concept, but I am telling this once again. ये 52C4 क्या आता है? ये होता है हमारे पास favorable outcomes that you have already done in 10th class. और ये होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अगर मुझे रैंडमली एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और मुझे कार्ड्स में से 4 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 52C4. दैट विल बी माय सैंपल स्पेस एंड दीज आर माय इवेंट्स. सो दिस विल बी माय फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ऐसे बेटा ये भी फेवरेबल आउटकम थी अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. सिमिलरली थ्री हार्ट्स. So 13C3 into 39C1 upon 52C4 plus 4 heart 13C4 upon 52C4. So this will becomes the case. So here you have to add up everyone. LCM सबका same है, LCM same लेके you will add up the cases and you will get the result. Last is all cards are club and one of them is jack. सबसे पहले तो हमने सिर्फ क्लब्स के बारे में बात करते हैं कि सिर्फ क्लब कार्ड्स आएंगे. सिर्फ क्लब कार्ड्स आएंगे मतलब हमारे पास कितने कार्ड्स हैं क्लब्स के? 13 कार्ड हैं. तो हम 13 कार्ड्स में ही सिलेक्ट करेंगे. फिर उसने बोला कि ऑल कार्ड्स आर क्लब, वन ऑफ देम इज जैक. एक जैक तो जरूर ही आएगा. अगर इसमें से हम एक जैक चूज कर लेते हैं तो बाकी के कितने कार्ड्स रह गए हमारे पास? 12 club cards रह गए. So if I have to see its probability, if I have to see the probability of D part, for example I am taking this is an event D, so it will become एक jack में से एक ही select होगा because it's already said that we have to select jack of the club. तो एक ही jack होता है club का और उसमें से एक ही select करेंगे into 12 बाकी के जो 12 कार्ड्स रहेंगे बाकी के 3 कार्ड्स इसमें से सिलेक्ट होंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो दिस विल बी, सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3. Let's move to question number 5. Let's move to question number 5. So question number 5 says that a box contains 75 tickets numbered from 1 to 3. 75 tickets हैं उसके पास और उसी पे उसी का नंबर है, जैसे 1 2 3 नंबर्स लिखी हैं. A ticket is drawn at a random from a box. What is the probability that number of ticket is divisible by 6?
So first of all, if I will talk about sample space, so हमने क्या किया है 75 कार्ड में से एक कार्ड चूज किया है. If you will find its if you will solve the factorial, it will come out to be 75 only. So the first part says number is divisible by 6. Number on is divisible by 6. So you have to write, I am taking this event as A. You have to write all the numbers from 1 to 75 that are divisible by 6. So let's start. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, then 66, 72, that's it. So these are the number. कुछ नहीं किया बेटा, 6 का टेबल लिखा है 60 तक और उसके बाद दो नंबर्स और, बिकॉज हम 75 से ऊपर नहीं जा सकते, 75 तक की टिकट्स है. So the number of elements of A become 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So the probability will become 12 upon 75. Favorable outcome upon total number of outcomes. Second part says number of ticket is a perfect square. So perfect square, जितने भी perfect square exist करते हैं हम पहले उनको लिखेंगे. So perfect squares is 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. कुछ नहीं किया बेटा, 1 देखो, 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है, 3 का 9, फिर 4, 5, 6, 7 का परफेक्ट स्क्वायर 49, देन 8, 7 का हो गया, 8 का देख लेंगे 64, 9 का आएगा 81, तो 81 तो 75 से बड़ा होगा. सो दिस विल बी माय, सो इफ आई एम कंसीडरिंग दिस एज B, so cardinality of set B will become, the number of elements of B will become 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the probability here becomes favorable outcomes upon total number of outcomes, that comes out to be 75. Next part is number on the ticket is prime. So in the similar way you have to write all the numbers which are prime and then you can find the probability. Third says number on the ticket is divisible by 3 and 5. So this needs to be done and understand. दो चीजें हैं बेटा, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है. Let's put this as D. दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है. इसमें लिखा है divisible by 3 and 5. मतलब जो भी मैं नंबर लिखूं वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए. So the first number becomes 15, next becomes 30, 45, 60 and 75. Okay? So here I am saying कि जो भी हम नंबर सिलेक्ट करेंगे वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए as well as 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए. तो बेटा ये नंबर्स आएंगे हमारे पास. If I would have said divisible by, so the probability here will become 1, 2, 3, 4, 5 upon 75. And you will obviously write this in the lowest form. This will become 1 upon 12. Sorry, 1 upon 15 if you will solve this. If I would have said divisible by 3 or 5, या तो 3 से divisible हो या तो 5 से हो, तो हमारे पास बहुत सारे नंबर आते हैं. तो हम 3 के divisible जितने भी नंबर्स हैं वो भी लिखते, जो 5 से divisible है वो भी लिखते. तो 3 आता, 3 आता, 5 आता, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, so on 75 तक हम वो सारे नंबर्स लिखते हैं जो 5 से भी डिविजिबल हैं और 3 से भी डिविजिबल हैं. So never get confused between and all. जब and आएगा
Try to solve this. If you face any problem, we will take the doubts in the live session. So now next topic is addition theorem. Addition theorem is nothing else but the theorem that you have already done in your sixth chapter. Let's see that. If I say S is my sample space, let's read the definition first. So here if I say S is my sample space associated with a given random experiment, हमने कोई random experiment किया और उसमें से S मेरी एक sample space आई है. Let A and B be the two defined, इस पे दो मैंने events define कर दिए. For example मैंने एक dice roll किया, मैंने A बोल दिया all the even numbers, B बोल दिया all the odd numbers. Okay. So then the probability of occurrence of at least one event is denoted by P union A. Okay. वो बोलता है कि इन दोनों में से at least एक का occur होना, at least occurrence of one event. At least occurrence of one event का मतलब क्या है? या तो ये या फिर ये. वो कैसे डिनोट होगा? A union B से. If I will say that occurrence of at least one event, या तो A occur होगा या फिर B होगा. इसको मैं कैसे डिनोट करूंगी? A union B से. And we have already done, for example, this is set A and this is set B. तो ये जो पूरा सेट है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? या तो A अक्कर हो सकता है या फिर B. That will be probability of A. Probability of A is this. Okay. Plus probability of B. So let me just represent it with other. So probability of B is this. Minus probability of A intersection B. I have already discussed in set chapter. ये वाला जो intersection है, we know that कि ये intersection होता है A intersection B. ये वाला जो intersection है ये दो बार overlap हो रहा है. एक बार जब हमने A की probability ली और एक बार जब हमने B की probability ली तो ये दो बार overlap होता है. इसलिए एक बार हम इसको subtract करते हैं, एक बार हम इसको subtract कर लेते हैं. So therefore it becomes A union B. The same concept that we were using in the concept of sets. Only the thing is that अब हम probabilities के बारे में बात कर रहे हैं. And whenever we are talking about probabilities, we are talking about the number of elements in sample space, which is none other than a set. So therefore the same concepts are being used. So related to this concept, let's solve exercise 7.3. Question number 1. So question number 1 says, we are now doing exercise 7.3. So question number 1 says two dice are thrown together. What is the probability that sum of the number on two dice is 5? So first part says this, or the number on the second die is greater than or equal to the first number on the first die. तो पहले हम event A, इसको दो event occur कर लेते हैं. मान लेते हैं event A is that sum of the number on two dice is 5. So I have written if two dice are thrown simultaneously, so we see 36 cases. Okay, so now we are saying that the sum should be 5. तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? एक तो ये 1,4 हो सकता है, एक ये 2,3 होगा, एक 3,2 होगा, एक 4,1 आएगा. Anything else? 2, 4, 6. So we will get 4 elements in set A. So that is 1,4, 2,3, 3,2 and 4,1. इन सब में सम 5 आ रहा है.
that should be greater than or equal to the number on the first die. Okay, kindly I just written it in the smaller form. Kindly write the whole sentence. So जो second die पे number होगा वो बड़ा होना चाहिए first die से. तो first वाले तो सारे consider first जो रो है वो सारे points आएंगे. Reason being जो second die पे number है वो first वाले से या तो equal हो या बड़ा हो. तो ठीक है 1 1 के equal है. 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है, 5 and 6. Similarly, let's write all the elements. So the elements will be 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. Then 2 2, 2 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 फर्स्ट वाला बड़ा है और सेकंड वाला नंबर छोटा है. या इक्वल या बड़ा होना चाहिए. 2 3, 2 4, 2 5, 2 6. If you will observe carefully, तो ये वाले सारे नंबर आएंगे that are on the other side. These whole numbers will, ये वाले सारे numbers consider होंगे. Let's count them. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. So the number of elements come out to be 21. Now we have to see दोनों के intersection में. So in third case we have to see कि दोनों के intersection में कितने आ रहे हैं. 1 4 आ गए. 1 4 यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं. 2 3 नहीं आएगा. 3 2 आएगा. 3 2 नहीं आएगा बेटा, फर्स्ट नंबर छोटा है, सॉरी. नेक्स्ट इज 4 1. 4 1 भी नहीं आएगा. 2 3 आएगा, सॉरी. 2 3 आएगा. So we have two elements here. So its probability will become 4/36. 4 नंबर सिलेक्ट किए 36 में. Its probability will become, let me just write it with yellow so that it's clear. So its probability of A will become 4/36. Probability of event B will become 21/36. Similarly, probability of A intersection B will become 2/36. हमें क्या निकालना है? हमें कैसा इवेंट निकालना है? हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें इवेंट A अकर हो रहा हो या फिर B हो रहा हो. That means at least A or B. So whenever we talk about or, या तो ये या फिर ये. So I have already told you earlier, we talk about probability of A union B. So that will be probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So that will be 4/36 plus 21/36 minus 2/36. So that will be 4 plus 21 is 25. 25 minus 2 comes out to be 23/26. So the answer of first question comes out to be 3/26. इसका मतलब ये है कि या फिर ये अगर होगा और या फिर ये अगर होगा. एटलीस्ट ए और बी में से एक चीज तो अगर जरूर होगी. सो इट्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी. व्हेनेवर अ क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A or event B, we always consider union. Let's consider second question, question number 2. Question is, a card is drawn from the pack of 52 cards. What is the probability that card is either red or black? Card is either red or face card. So if two cards, for a card, if one card is drawn
number becomes 52 only. There are 52 ways it can be selected. So the first says card या तो red होना चाहिए या फिर black. So I have said that my event A is a red card. So the number of elements in red card in A will be 26C 26C1 कि एक कार्ड मेरे पास रेड का आया है. So this will become 26 and its probability will become 26 upon 52. Second is B, that is a black card. So the number of elements हमने 26 कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट किया है. So its value become 26 only. So I hope you students all know कि 26 कैसे आती है. 26 factorial upon 1 factorial into 25 factorial. n factorial upon r factorial into n minus r factorial. 26 को मैं आगे कैसे लिख सकती हूँ. 26 into 25 factorial, इससे ये कट जाता है. So the answer become 26 only. So 26C1 is 26 and its probability becomes 26 upon 52. Now we have to find its intersection of A and B. So if we will see black और red card में कोई भी intersection कुछ भी common नहीं है. Therefore the intersection becomes 0 and obviously the probability of A intersection B also becomes 0. So if I have to find its probability, so either और बोला है ना या फिर ये या फिर वो. We will use the concept of union. So this becomes probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. That is 26 upon 52. So that becomes 1 only. So this was in the similar way. You can do part number B. Card is either red. जब हम रेड कार्ड की बात करेंगे तो सेम आएगा. सेकेंड इज हमने फेस कार्ड के बारे में बात करनी है. We know that फेस कार्ड कितने होते हैं 4. तो 4 में से एक चूज हुआ है. So this will be 4 and here also it comes out to be 4. Now the intersection में कितने कार्ड जाएंगे. रेड और फेस भी होना चाहिए. Sorry, there are 12 face cards. Sorry, there are 12 face cards, so it becomes 12. And here also it becomes 12. Face card होना चाहिए और red होना चाहिए. So there are 3 red face cards. 3 diamonds के 3 heart के तो 6 हो गए बेटा. Red card कौन कौन से होते हैं. 3 diamonds के face card हो गए, 3 red के हो गए. तो ये 6 होगा. So this becomes 6 upon 52. And when we will apply it in the formula and rest you can do the calculation and find its sum. That will be 26 plus 6 32 upon 52. इसको आगे simpler form में जरूर convert करना है. That will be 16 upon 26. Again it will be 4 upon 13. So this will be your answer. कभी भी आपने आंसर में ऐसे नहीं छोड़ना. हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करोगे तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज अ बैग कंटेन 50 tickets numbered from 1 to 50. One ticket is drawn at random. What is the probability that number on the ticket is a perfect square or divisible by 4? So let's solve this. किए 50 में से. So the sample space will be, kindly write the statements. I am not writing the statements here. 50. So let's solve A part. So A को मैं ले लेती हूँ that it is a perfect square.
स्क्वायर। तो कितने एलिमेंट्स आएंगे ए में? 1 4 9 16 25 36 49। So कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। So its probability becomes 7/50। ऐसे b सेट ले लेते हैं और डिविजिबल बाय 4। जितने भी नंबर डिविजिबल बाय 4 हैं उसको लिखते हैं 4 6 4 8 12 16 24 20 24 28 32 40 44 48। So how many numbers become? 10 11 12। So probability of B becomes 12/50। Now we have to see its intersection। कि intersection में कितने numbers आ रहे हैं? 4 16, that's it। दो नंबर आ रहे हैं 4 और 16। So it will become, its probability become 2/50। So again we have to see that number should be either a perfect square or divisible by 4. We will put in this formula and this will become 7/50 plus 12/50 minus 3/50। 3 or 2/50। 1 4 Is there any other number? 36, sorry 36, और ये भी कॉमन आएगा, so there will be one more number 36। So this will become 3, this will be 7 plus 12 minus 3। There is one suggestion, जैसे यहाँ पर कटिंग हो रही है तो यहाँ पर कटिंग मत करना, डोंट कन्वर्ट दिस इनटू सिंपलर फॉर्म, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम होंगे। जब सबके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो प्लस माइनस करना बहुत इजी होगा। प्लस माइनस करके जो फाइनल आंसर आएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट करना। तो दिस विल बी 7 plus 9/50, that is 16/50, 8/25। So this will be the final answer। In the similar way आप a को ले लेना प्राइम नंबर b पार्ट b में greater than 30 and then you can find this in the similar way। Let's solve question number 5। Question number 5 says 100 students appeared for 2 examinations, 60 passed the first, 50 passed the second and 30 passed in both। minus 2 times A
बार इसे ट्रैक करता है टू फाइंड ए यूनियन बी. So here my question says कि intersection का पार्ट आना ही नहीं चाहिए, या तो A का पार्ट आना चाहिए या फिर B का पार्ट आना चाहिए. Either this exactly in one examination, या तो वो A में पास हुआ हो या फिर वो B में पास हुआ. तो intersection हम दोनों बार जो overlap हो रहा है उसको subtract कर देंगे. सॉरी इसका हमने probability नहीं निकाला. So there were 100 students. So इसकी आ जाएगी 60/100. इसका आ जाएगा 50/100. So this will be 30/100. So this will become, and directly write 6/10 plus 5/10 minus 2 3/10. If you will solve this, this will become 5/10, that is 1/2. So the third part says failed in both exams. मतलब ना तो वो A में पास हुआ ना फिर वो B में पास हुआ. And we know that हमारे पास एटलीस्ट वन पास वाला पार्ट है. तो जब हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा, ना तो वो A में पास हुआ ना ही वो B में पास हुआ. Let's see the last question, that is 8th question. A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of it being heart or a queen. I am just giving you heart. For example, A हमने heart cards ले लिए. तो heart cards कितने होते हैं? 30. उसमें से हमने कितना सिलेक्ट किया है? एक कार्ड सिलेक्ट किया है. Obviously the sample space will be 52C1, that will be 52 cards, so this will become 13, and its obviously probability become 13/52. And then similarly B we will take of a queen. So we know that 4 queens होती हैं, तो directly मैं लिख रही हूँ इसकी probability ये बन जाएगी 4/52. Now comes the part कि intersection में क्या आएगा. इंटरसेक्शन में हार्ट के कार्ड्स में कितनी क्वीन होगी? एक. और इस 4 क्वींस में एक ही सिर्फ हार्ट की क्वीन होगी. सो देयरफॉर दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ एक कार्ड आ रहा है. सो देयरफॉर इट विल बी 1/52. and then you have to find the probability of either this or that. You will apply the formula of probability of A union B. A union B से you can find its probability. So students, these were some of the questions of exercise 7.3. Some of the questions I have not done, they are quite easy. Try to solve it. If you will have any doubt, we will discuss it in the live session, and from next lecture we will discuss